Okay, right. So shall I start? Yeah, Irfan, it's up to you. Okay, right. Okay, I'm starting in 1 minute. I think, can you see the screen? I think all the students can see the screen. You can raise your hand in the chat box. Okay, I request all the participants to turn off their video also, that we can have a better bandwidth also. Okay, so let's start. Okay, so we are discussing quadratic equation, and in the last class I also gave some basic examples of the equation. Now today we want to just differentiate between a linear equation and a quadratic equation. I think you can hear me. If you can hear my voice, you can just raise your hand or reply in the chat box. Yeah, okay, so sure. So what is a linear equation? Suppose this is an example: x plus 5 is equal to 6. So 2m minus 3 is equal to 5. Y by 3 is equal to 5. 4b by 5 minus 6 equal to 5. So these are all the examples of basic linear equation, where the relation between equation, in the equation it is linear. Okay. So what are the linear equation where the highest degree of the exponent in the variable is 1 only? Suppose here you can see that x plus 5 equal to 6. तो यहाँ पर x का जो पावर है वो 1 ही है. सिमिलरली यहाँ पे 2m minus 3 equal to 5 है, तो m का जो पावर है वो 1 है, b का पावर 1 है, y का पावर 1 है. तो ये सारी इक्वेशन जो है आपकी लीनियर इक्वेशन है. और जब हम क्वेरी इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर एटलीस्ट 2 होती है. तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 20 is equal to 0. Okay, then we have 4b square minus 2b minus 17 is equal to 0. तो यहाँ पर you can see कि m की पावर जो है वो 2 है, x की पावर 2 है, b की पावर 2 है. तो these are all the examples of a quadratic equation. हम लोग बहुत बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ पार्ट हम रिवाइज भी करेंगे कल की क्लास के लिए. So if you have any problem or any queries, आप chat box को use कर सकते हैं. इसके बाद हम discussion भी करेंगे. Okay. Okay, so chat box में अब जब भी कोई reply करते हैं, you can write your name also. Okay. And next जो है, let us identify. ठीक है, एक practice हम लोग करते हैं कि how to identify it is quadratic or not. So यहाँ पर x plus 5 is equal to 6. Of course, it is not a quadratic equation. ये आपका linear equation है. अब x square plus 5x minus 6 अगर हम देखें तो it is of course a quadratic equation. So you can identify ना, 4x square is equal to 2x minus 4. Of course, it is also a quadratic equation. Okay. Then if I talk about x into x square plus 4 equal to minus 4, so it is basically a cubic equation. It is a power more than 2. Okay. Then x minus 3 into x plus 4 equal to 0. So here also if you multiply these two quantities, then x की power जो होगी वो 2 होगा. So of course it is also a quadratic equation. Okay. 4x square plus 2x minus 6 is equal to 4x square. आप मुझे बता सकते हैं, is it quadratic or linear? In the chat box you can reply. Is it quadratic or linear?
So of course यहाँ पे 4x square 4 square term कट जाएगा, so it will be basically a linear. Okay, so it is a linear equation, it is not a quadratic equation. Okay, so let us go more into the equation. So मैंने कल बताया था आपको, yesterday we had discussed that ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation where a, b and c are real numbers. And of course a should not be equal to 0. अगर a यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? The equation will become linear. It will not be a quadratic equation because the coefficient of x square will be equal to 0. Then x square term will be 0. तो यहाँ पर bx plus c जो है वो एक example linear है. तो a should be not equal to 0. A be positive and a can have different values also. हमने कल डिस्कस किया था ग्राफिकली कि जब a पॉजिटिव होगा तो आपका जो कर्व है वो पॉजिटिव आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व क्या होता है, यू नो दैट इट इज पैराबोला. ओके, तो एग्जांपल क्या है, इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है या कोएफिशिएंट ऑफ एम स्क्वायर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अगर इट इज नेगेटिव अगर होता है तो हमें उसको पॉजिटिव करना होता है. तो यहाँ पर जो इक्वेशन है 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये एग्जांपल है आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. Now if you want to find the value, so you can easily find the value of a, b and c. So here a will be equal to 2 and b will be equal to your minus 3 and c will be equal to 5. Okay, so some questions हम लोग practice करते हैं just to make you more you're friendly with the equation. The equation बहुत अच्छे से समझ में आ जाए and you can go through it very easily. तो सपोज हमारे पास अगर कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और अगर हम लोग a को 0 कर देंगे तो टेल मी व्हाट विल हैपन. यू कैन रिप्लाई इन द चैट बॉक्स. या इट विल बिकम लीनियर. ओके, सो suppose we have 0m square plus 4m minus 6 equal to 0. So this will be equal to 4m minus 6 equal to 0, that is equal to 4m minus 6. That is a linear equation. Okay, so जब भी आप coefficient of x square को 0 करोगे then the equation will convert into linear. Okay. Okay, now whether the equation is in standard form or not, you can identify. So suppose this is the equation 2x square minus 5x plus 3 equal to 0. So is this equation in standard form? So yeah, it is. So यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना because हमारे पास a की वैल्यू भी है, a is 2 है, b minus 5 है और c आपका 3 है. Okay. लेकिन कभी कभी कुछ इक्वेशन होती है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन है माइनस 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 4 इक्वल टू 0. तो बिकॉज जो कोएफिशिएंट a आपका यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ये आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा. तो कैसे करोगे? सो यू कैन इजीली मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड LHS एंड RHS and you will get the equation 3m square plus 5m minus 4 equal to 0. So this is the standard form. So better before solving any equation, it is better to convert the equation into the standard form. उससे आपके लिए future में जब आप standard form or not, you can reply in the chat box. Is this equation is in the standard form? No, it is not. So you have to, what you have to do, you have to move the RHS term into the LHS. So now the equation, and then you have to multiply this with the -1, then you will get the equation b square minus 4b minus 8 equal to 0. So this is the linear form. Okay, so the first step to solve the equation is जब भी कोई equation आपको दी जाए तो आप उसको पहले standardized form में convert कर दो. Terms को इधर उधर आपको move करना है, या if you want to change the sign multiplication वगैरह करके you can accurately find the value of a, b and c. तो यहाँ पे a की value 1, b की value है -4, c is equal to -8. Okay. Again, I will give you one more question to practice. 2d square minus 6 equal to 0. So now you can tell me, is this equation is in standard form or not? So you can just reply me in the chat box. Okay. And yeah. So yeah, it is in the standard form, but it is not complete क्योंकि यहाँ पे एक term missing है आपका, वो b term missing है. तो एक्चुअल में अगर हम इक्वेशन को अगर हम फुली लिखेंगे तो द फुल इक्वेशन विल बी इक्वल टू 2d स्क्वायर plus 0 into d minus 6 equal to 0. Okay, so it is better to write it this way so that you can identify the term a, b and c. कभी कभी क्या है यहाँ मिस्टेक हो जाती है, हम लोग c6 को b मान लेते हैं suppose in the examination, then it will be a whole disaster.
So better to errors को minimize करने के लिए we can always write the equation in this form. So 2d square plus 0d minus 6 equal to 0. So yeah, now you can easily interpret that a is equal to 2 and then b is equal to 0 and c is equal to minus 6. Okay. Now let us try. Again, we have more equations. X square minus 7x equal to minus 1. Then can you say is it in the standard form or not? So you can, this is your homework also. Minus x square plus 2x plus 11, x into x minus 4 equal to 14. So you can try this at home. Okay, इसका snapshot आप ले लीजिए. Then you can reply me on my email. Okay. तो अभी हम लोग एक just आपको मैंने homework दिया है, तो इस equation को आप है ना, you can take a snapshot. कुछ questions और है आपके लिए. You can take this snapshot also of this. Okay, I will give you some minutes to, if you want to write on the paper, you can write on the paper also this question. Okay, question number 1, x square minus 7x equal to minus 1. Then we have minus x square plus 2x plus 11 equal to 0. Then we have x into x minus 4 equal to 14. Then we have 3y minus 1 into y plus 2 is equal to 0. So you have to identify के ये standard form में है या नहीं. And then you also have to identify the value of a, b and c. This is only for your practice. It will be very easy for you, लेकिन ये easy form हमें करना चाहिए because it will make you more handy. बहुत से students को ये चीज आती होगी, but still you should practice it to make you more handy in the in solving the equation. Okay. Now identify if it is quadratic or not. So also you have more equation. 3 is equal to 15 minus 2x. Then x square is equal to 0. Then 6x square is equal to minus 3x. X into x minus 4 is equal to 14. X square minus 5x is equal to 0. In the B part, you have to write the equation in the standard form, and then you have to identify the value of a, b, and c. Here, x square minus 7x plus 1 is equal to 0. Then we have minus x square plus 2x equal to 0. Then we have 9x square minus 5x equal to 5. Then we have x into 8 minus 13 of x is equal to 6. Then we have 2x square equal to 9. Then we have 2x minus 4 into 2x minus 5 is equal to 9. So just scribble this on your piece of paper, or you can just take a snapshot with your mobile phone or a screenshot in your mobile. So have you taken the notes? Just give me a reply so I may move forward. Okay, give me a reply in the chat box that you have taken the notes. You have written all the questions. Yeah. Okay, so after solving, you can share the answers on my email ID. Okay, this is my email ID. And this is my WhatsApp number also. So you can share me so that I may know that you are getting it. ठीक है, तो आप हमें मुझे email ID में आप मुझे मैसेज कर देना इसका सॉल्यूशन जब आप बनाते हो. इजी है, आप ये piece of paper के अंदर सॉल्यूशन लिखकर उसको स्कैन कर देना मोबाइल से. You can send me as a PDF, or you can WhatsApp me also on this number so that I will know that you are getting it. ठीक है ना? The motto is here to only to make you active, and you can identify the equations. So just take a screenshot of this. Email ID irfanalialvi@gmail.com and my WhatsApp number. Okay, so let us move on. I have an answer key also. I will share it later. Okay, so are you getting it? You can reply me in the chat box, right? If you have any queries. So now let us move on to the our equation, and you know that y equal to ax square plus bx plus c is our standard form of a quadratic equation. Yesterday हमने कुछ चीजें डिस्कस की थी लास्ट क्लास में कि इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली प्लॉट कैसे करेंगे. ग्राफिकली प्लॉट करने से एडवांटेज इज दैट यू विल बी एक्चुअली एबल टू विजुअलाइज द इक्वेशन, और आपको यू विल बी गेटिंग टू नो दैट व्हाट द इक्वेशन लुक्स लाइक इन द रियल नेचर and what are the different portions of the equation. Okay, so you know that by default the graph or the curve of this equation is a parabola. Okay, so you have drawn a parabola here, and there are some special characteristics are there. So what are the special characteristics here is that when your a is positive, when the a is positive, then you can see that when a is positive, then the graph will be positive, it will not be inverted. अगर a मेरा नेगेटिव होगा यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली जो पैराबोला है वो इन्वर्ट हो जाएगा, and it will be
उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, लाइक एन अम्ब्रेला। ओके, यहाँ पर जो पैराबोला है हमारा वो सीधा है, ठीक है ना। तो ए आपका पॉजिटिव है, उससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि पैराबोला सीधा होगा या उल्टा होगा। और अगर ए नेगेटिव हो जाएगा तो मेरा पैराबोला जो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे यू कैन सी दैट this point is called the vertex. This point is called the vertex of the parabola. Okay, and what is the vertex of the parabola? कैसे निकालते हैं vertex को? Basically, जब आपको पता है कि parabola जो है वो x axis को कट करेगा, अगर तो उसके रूट्स होंगे। कुछ पैराबोला होते हैं जो x axis को कट नहीं करते, उसके रूट्स जो होते हैं वो रियल नहीं होते, then they have the imaginary roots. अगर रियल रूट्स है इक्वेशन के, तो वो पैराबोला हमेशा जो है वो x axis को कट करेगा। It can cut the positive x axis or it can also cut the negative axis. It depends on. लेकिन जब ये पॉजिटिव एक्सिस को कट करेगा, then you can see that there will be 2 points. दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे आपके पैराबोला के, and those are the roots of the equation. Okay, जब आपने रूट्स फाइंड कर लिए और अगर आपके रूट्स रियल है, then what will happen कि आप एक लाइन जो ड्रॉ कर सकते हैं onto the on this, जो इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होगा। यानी जो भी रूट्स है आपके, सपोज द रूट्स आर 1 and 5 या whatever 2 and 6, तो इन रूट्स के बिल्कुल मिड पॉइंट पे आप एक लाइन ड्रॉ करें। ये जो लाइन होगी ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाती है, और ये पैराबोला को जब इंटरसेक्ट करता है तो यू विल फाइंड द वर्टेक्स। नाउ हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स? बेसिकली वर्टेक्स पर यू नो दैट एट द पॉइंट ऑफ वर्टेक्स एक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। तो सपोज आपका जो ये पॉइंट है 3 है एक्स पे, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में एक्स को 3 लिखोगे तो यू विल डायरेक्टली गेट द y, यानी जो भी पॉइंट है आपका मिड पॉइंट है उसको आपको x में पुट करना है, तो एग्जैक्टली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एंड दिस y विल बी योर डेप्थ, यानी पैराबोला का डेप्थ कितना है। अगर पैराबोला पॉजिटिव है तो उसका डेप्थ होगा, अगर पैराबोला नेगेटिव है तो उसका हाइट होगा। तो यू विल गेट एग्जैक्टली द वर्टेक्स पॉइंट। ओके, okay, now next, these are the line of symmetry. The parabola is basically opening upwards. Now you can see here that your a is greater than 0, y equal to ax square plus bx plus c. Here a is greater than 0, a is positive. So because your a is positive, your parabola is upright, it is straight, okay, and it is opening upwards. तो ये इसके characteristics है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो गए पैराबोला में? रूट्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, हाउ टू फाइंड द वर्टेक्स। अच्छा, एक पॉइंट और है कि हाउ द पैराबोला विल इंटरसेक्ट इन द वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो पॉइंट भी आप जनरेट कर सकते हो। यू ऑलरेडी नो दैट जब ये पॉइंट अगर आपको निकालना है तो इस पॉइंट पे यू नो दैट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड y इज समथिंग। सो सिंपल है, इक्वेशन पे आप क्या करो, x को 0 पुट कर दो। तो यहाँ पर अगर आप x को 0 पुट करोगे तो y इक्वल टू पॉइंट है आपका, तो ये एक पैराबोला है which is having the vertex at the origin. Okay, so this is the parabolic equation where y is equal to x square. Are you able to see my screen? Yes, sir. Yeah, you are able to see now. Okay, you don't have any problem? If you have any problem, you can write in the chat box also. Okay, it is visible to you. So y is equal to ax square. So here you can see that this is the equation of the quadratic equation where you can see the b and c term are missing. b यहाँ पे 0 है, c 0 है, लेकिन ये जो एक इक्वेशन है ये क्या शो करता है कि पैराबोला जो है आपका वो ओरिजिन से पास हो रहा है, यानी the vertex is at the origin by default. Okay, and a is positive, so that's why the parabola is not inverted, it is positive. अगर यहाँ पे a negative होता तो parabola आपका जो है वो inverted हो जाता। Okay, so you can see the example. Yeah, if a is negative, then your parabola will be inverted. Okay, so yeah, here also again you have the equation y equal to ax square plus bx plus c. But here the thing is that a is negative, and when a is negative, then you can see that the vertex is lying above. Okay, and the depth, there is no depth, there is a rise portion. Okay, and the same things are there. Parabola जो है वो intersect कर रहा है आपके y axis को at 0, c, क्योंकि 0, c इसलिए because you can put your x equal to 0, then you will get your a and b as will be removed and y will be equal to c, and again you will get the axis of symmetry and the vertex. Okay, so the parabola will be basically opening downwards. Okay,
So now let us move on. Suppose if we have y equal to minus x square, then we can say that the parabola will be equal to yeah, just a minute, I'll share you again. Yeah, so parabola will be inverted. Okay, so yeah, so you're able to see. Okay, so this is my drawing board. I will just try to draw the curves. So suppose my y is equal to minus x square होगा, तो parabola जो है मेरा वो origin पे vertex होगा, but it will be basically inverted. Okay, so this is the equation for the parabola where y is equal to minus x square. Okay, where a is negative. Now suppose I have y is equal to x square plus 1. Okay, so यहाँ पे typical equation है y equal to x square plus 1. यहाँ पे you know that your a is equal to 1 and c is equal to 1, but you have b is equal to 0. Okay, so what will be the curve? Okay, so if suppose we want to uh, curve suppose we want to make a graph. So here, so let us go to the drawing board and I will just share the screen again. Okay, so in this case, what will happen that suppose my y is equal to x square plus 1 है, तो इस केस में ये इक्वेशन है हमारी y equal to x square, okay, where the vertex is at the origin. But when y is equal to x square plus 1 hoga, then you can simply draw the parabola will be moving, shifting upward. So it will be shifting upward. Okay, so this will be the parabola for y equal to x square plus 1, where this portion will be 1. Okay, this portion will be 1. So it has actually moved upward to 1. Okay, now suppose if my parabola is y equal to x square minus 1, the minus 1 hoga, to my parabola will basically shift downwards. Okay, and this will be my point minus 1. Okay, so if my equation is y equal to x square minus 1, then the parabola will be shifting down by unit 1. So you can easily draw various equation for the quadratic. यानी quadratic equations ही ये सारे, लेकिन हम easily क्या है कि इसके ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. Okay, now suppose I have y equal to x minus 1 whole square. Now this is basically a perfect square. Okay, so what will be the equation for y equal to x minus 1 whole square, and then we have y equal to x plus 1 ka whole square. Let me draw you the equation for this too. Okay, and that Nepal is a puppet vagina. It gets funnier when you think that India, Tripoli, and Kala money belongs to Indian territory. okay, so you can see here. Okay, okay, I can request you that you can mute your mic when you are not talking. Okay, if you have any queries, then you can write in the chat box. Okay, so again I will just draw you the equation for y is equal to x minus 1 ka whole square. Okay, so the standard equation aapki jo hai wo y equal to x square hai. So always when you are trying to make the equation of the parabola, or you want to visualize it, aap pehle y equal to x square draw karo. Now if you want to draw y equal to x minus 1 ka whole square, so basically it is simple. The parabola will be basically shifting to the right. जब आपका x minus 1 आएगा, तो parabola जो है basically वो right की तरफ shift होगा. ठीक है ना? And this is the point. So this is my curve for the x minus 1 whole square. Okay, this point will be, this is my plus 1. Okay, this is my plus 1, but this equation is for x minus 1 whole square. Okay, you should realize it. Confusion मत करना कि ये minus 1 है तो यहाँ minus 1 आएगा. Minus 1 ही आएगा. X minus 1 whole square. Y is equal to x minus 1 whole square. So this is the equation when your parabola will be shifting. Okay, it is shifting to the right. Okay, similarly अगर हम बात करें कि जो है आपका पैराबोला जो है वो इक्वेशन अगर हम बात करें y is equal to x plus 1 whole square होगा, then what will be the equation? The parabola will be shifting toward the left side. So your the parabola will be like this. Okay, so here your x is equal to minus 1. ये point आपका vertex का है. This is the equation for y equal to x minus 1 whole square. Okay, so so you can see here that okay, just a minute. Yeah, so y equal to x minus 1 pe whole square, then you are shifting to the right. When y equal to x plus 1 whole square, then you are shifting to the left. Okay, now we can draw more complex equation. यहाँ पर दो equations है आपके quadratic equation. Y is equal to x minus 2 का whole square plus 1.
then we have again y is equal to minus x plus 1 का whole square minus 2. Now how to do this type of equation? तो बहुत इजी है, इसके अंदर दोनों चीजें होगी, यानी आपका जो ग्राफ है पैराबोलिक ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो अपवर्ड डाउनवर्ड भी शिफ्ट होगा और लेफ्ट साइड और राइट साइड भी शिफ्ट होगा. ओके, तो जस्ट लेट मी एक्सप्लेन यू. ओके, okay, so let me draw the equation for y, first one, y equal to x minus 2 whole square plus 1. Okay, so let me draw. So this is the x and y axis. Okay, and suppose you want to draw the equation for y equal to x minus 2 whole square plus 1. So you know that x equal to minus 2, y equal to x minus 2 है, तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है वो हमारा राइट में शिफ्ट हो रहा है. ओके, बट c की वैल्यू 1 है यहाँ पे. So first you have to identify the point. Okay, this is my point. Suppose this is my c is equal to 1. Okay, so you can write here c is equal to 1. C will be always along the y-axis. So this is my point. Okay, and then this point will be 2 on the x-axis. X-axis में ये point आपका जो है वो 2 है. Okay, so now this is the coordinate. Okay, this is the vertex, and then you will now draw your parabola, and your parabola will be like this. Okay, so this is the parabolic graph for y equal to x minus 2 whole square plus 1. So plus 1 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड शिफ्ट हो गया, और x माइनस 2 जब आपने यूज किया तो पैराबोला जो है वो आपका राइट की तरफ शिफ्ट हो गया. ठीक है ना. अच्छा, मान लो अगर आपका माइनस एक्स माइनस हो जाए अगर, यानी इफ यू हैव सेकंड इक्वेशन जो हमारी थी वो क्या है, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2. तो यू कैन ऑब्वियसली नो दैट यहाँ पे आपका माइनस आ गया, तो इसका मतलब है कि a की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब है कि पैराबोला जो है आपका वो इन्वर्ट हो गया. ओके, तो पैराबोला इन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे. प्लस 1 और माइनस 2 दो चीजें यहाँ पे. ये जो प्लस 1 है ये शो करता है कि पैराबोला राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा. तो प्लस 1 का मतलब है कि पैराबोला जो है वो आपका लेफ्ट शिफ्ट होगा. माइनस 2 का मतलब यहाँ पर c की वैल्यू जो है वो आपने शो कर दी. c की वैल्यू माइनस 2 है, यानी इट इज गोइंग इन द नेगेटिव y एक्सिस. वर्टेक्स जो है नेगेटिव y एक्सिस पे जाएगी और x एक्सिस में वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. So let me draw again the shape of this graph. Okay, so let me draw the shape of the graph, and you can see here. So this is my y and this is my x axis. Okay, and because my parabola is shifting left side, and the it is also going downward because minus 2 है c, तो ये आपका minus 2 हो जाएगा c point. ठीक है, c is equal to minus 2. Okay, c is equal to यहाँ पे minus 2 है, और यहाँ पर ये left side shift हो रहा है because it is x plus 1. तो अब आपको क्या है कि आपके कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से निकालने हैं, and this will be the vertex. So this will be the vertex of the parabola. Okay, the parabola will be inverted because coefficient आपका जो है वो negative जा रहा है. Okay, so now you can draw your parabolic curve. So this will be like this. Okay, so this is the graph for y is equal to minus of x plus 1 का whole square minus 2. So you can see here कि हम लोग क्या है कि पैराबोला ड्रॉ करते हैं for different equations, and easily we can understand कि how to draw. Okay, I am giving you an homework. ये इक्वेशन है हमारी y equal to x square plus 2x minus 1. तो इसको आप ट्राई करना घर पे. If you can draw the graph for this also. सिंपल तरीका है. The easy method है कि अगर इक्वेशन दे रखी हो पैराबोलिक इक्वेशन, तो इसको हम लोग क्या है कि होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं. तो सपोज यहाँ पे y equal to x square plus 2x minus 1 है, इसको ड्रॉ करना डिफिकल्ट है. तो इस इक्वेशन को आप क्या करो, प्लस 1 माइनस 1 ऐड कर दो इसके अंदर RHS में. तो x square plus 2x plus 1 minus 1 यहाँ पे क्या होगा, y will be equal to x plus 1 whole square minus 2. अब ये इक्वेशन आपके समझ में आ जाएगी. नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द ग्राफ. यू नो दैट c की वैल्यू क्या है यहाँ पे, c is equal to minus 2, और यहाँ पे शिफ्टिंग क्या होगी, राइट शिफ्टिंग होगी, लेफ्ट शिफ्टिंग होगी. आपको पता है x plus 1 है, तो x plus 1 है तो इसका मतलब है कि शिफ्टिंग जो है वो लेफ्ट की तरफ होगा. तो नाउ यू कैन इजीली ड्रॉ द graph of this equation. So you can draw this me and you can show me on my
email ID. Okay. Now the next topic is how to solve the quadratic equation. Abhi time वैसे don't have much time, but still you can revert to me and we will be moving further. हम अगली class में इसको cover करेंगे. Just generally मैं आपको show करता हूँ कि how to solve the quadratic equation. There are different methods. First method is by factorization. Then another method is by graphical method. Then we have by taking square roots. Then we have by quadratic equation को solve करके. Then we can also use the graphical method. Okay, we can also use the method for completing the square. I will just show you. Yeah, time is going to end. Okay, so let us we'll try to solve this things in the next class. Okay, in the next class I will be trying to solve you. I will help you to how to solve the quadratic equation. तो आज के लिए इतना काफी है. You can practice at home also. जो assignment मैंने आपको दिया है वो आप एक बार revert करना to me. Take your time. I think you can answer me by I think Saturday तक का time है आपके पास, so you can answer me so that I will get to know okay you are getting something. Okay, so that's all for today. Just you can put your queries in the chat box. Okay, if you have any queries or anything, you can. I'm also unmuting you. Okay, so you can unmute also, and you can tell me if you have any queries. You can also talk to Gazanfar sir and how you like the class and all about that. So I have unmuted you. Okay, time is over now, almost. So